and free. The last 2 days we were talking about basically about how a book came into life, and we spoke about Bill, Bob, E.B. Thatcher, Roland Hazard, Carl Gustav Jung, Oxford Group's founder, Frank Buckman, and then Father Samuel Shoemaker, Dilkworth, so many people who are involved. And basically, doctor's opinion, Bill's story, and there is a solution. They talk about alcoholism and our relationship with alcohol and why it is not curable for alcoholics of our type. In this book, you will see again and again one particular word used, alcoholic of our description, the real alcoholic, or the hopeless variety, or the chronic alcoholic. Now, as it is, this book is about alcoholism, Alcoholic Anonymous. More about alcoholism का मतलब क्या है? मतलब मैं सब इतना पी पा के आया इधर, ये कोई इससे ज्यादा अल्कोहलिज्म के बारे में क्या मेरे को समझने का 90% के ऊपर हमको मालूम है अल्कोहल हमारा लाइफ में क्या किया क्या है, पर हमारा अल्कोहल का रिश्ता क्या है, हम क्यों उसके साथ बार बार जाके लड़ रहे हैं, जिसके साथ हम जीत नहीं सकते उसके पास क्यों बार बार, ये मालूम होकर इस बार भी मार खाएंगे बोल के व्हाई वी आर डूइंग इट अगेन एंड covering that and taking you this to the second step through this. And the chapter, the agnostic, is basically about the third step. That is why when you read how it works, after reading everything that you read daily, it made three pertinent points clear, A, B, C. After that, you will find convinced now that we are at step 3. That means जहां तक हमने चैप्टर 5 तक जो पढ़ के जा रहे हैं उसमें हमको कन्विंस होना चाहिए I am a chronic alcoholic or the alcoholic of this description the book is written for. I am the real alcoholic who cannot quit, control, or moderate. And I need a spiritual experience. So, with that, we will start chapter 3. More about alcoholism. This is in page number 30, Big Book, 3rd edition. Again, I want to tell friends that जो भी मैं बात कर रहा हूँ, maybe you did not hear me properly, maybe did not say that properly, or you heard it out of context, whatever it is. If whatever I say does not reconcile with the big book, kindly throw it. And those who have got sponsors with whom you are working, listen to your sponsor. This is just a speaker meeting. I'm trying to give you the vital points of this big book. So let us start with this chapter 3, more about alcoholism. In the first paragraph, 1, 2, 3, 4, 5, 6th line, this is the most vital thing to read. The idea that somehow, someday, he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. The persistence of this illusion is astonishing. Some pursue it into the gates of insanity or death. 4-5 लाइन में क्या क्या देखने का, the idea, obsession, abnormal, illusion, astonishing, pursue, insanity. And the next paragraph he writes, we learned that we had to fully concede. Concede means accept defeat. We accept defeat हमारा किताब पे किधर पहले बार आता है तो बिल का कहानी आपने पढ़ा तो पेज नंबर 11 पैराग्राफ 3 में आएगा, like myself he had admitted complete defeat. मतलब एबी थैचर भी मेरे जैसे डिफीट एक्सेप्ट करके ही प्रोग्राम किया तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं. Concede means to accept defeat. We learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery. The delusion that we are like other people or presently may have to be smashed.
So now let us take these two paragraphs and we start with the idea that somehow, someday he can control and enjoy his drinking is the great obsession. If you go into the dictionary and see what is obsession is irrational mental attachment. Irrational means which is not true. एक झूठ को सच मान के उसके ऊपर इतना प्रूव करने के लिए निकल गया हमने, ये पूरा दुनिया को प्रूव करके दिखाता हूं, मेरा दारू से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बाकी और कुछ प्रॉब्लम है. The idea that somehow, someday he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. Abnormal drinker. A normal drinker 2 बार 3 बार पी के ऐसे ब्लैकआउट होकर गटर में गिरा तो छोड़ देगा. The persistence of this illusion is astonishing. Astonishing में आश्चर्य होता है. Many pursue it at the gates of insanity or death. The persistence of this illusion. There are 3 words: obsession, illusion, delusion. Illusion है, एक बड़ा मैजिशियन है, स्टेज के ऊपर एक बड़ा पर्दा लगाएगा, उसे पहले दिखाएगा स्टेज खाली है, ऐसे पर्दा डाल के, बड़ा पर्दा डाल के कुछ मंत्र पड़ेगा, ये करके फिर पर्दा हटाएगा, पीछे स्टेज में एक बड़ा हाथी खड़ा है. सबको मालूम है ऐसे नहीं हो सकता है, ये मिरर का ट्रिक होगा, ये होगा, वो होगा. बट फॉर अ सेकंड ही मेक्स यू बिलीव which is not true. Illusion is something when somebody creates some things that makes us believe in something which is not true, but believe it is correct, right? एक क्षण के लिए वो झूठ को सच साबित करता है ताकि वो मैजिशियन है. ये इल्यूशन है. डेल्यूशन है हमारा दिमाग की हमारा मैजिशियन है. दारू पी के हम गटर में गिरा, रिहैब करा, बीवी छोड़ के जा रहे, काम गया, बच्चे लोग घर पे रो रहे, सब लोग ऐसे स्थिति में मेरा दिमाग बोल रहे तुम ऐसे बेवड़ा नहीं रहे, टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, अभी फाइनेंस स्ट्रेस ज्यादा हो गया, और वैसे भी वो ज्योतिष ने बताया 3 साल ऐसे होगा, शनि बैठा है. The delusion is to hold on to irrational idea which is not true. इल्यूशन बाहर से होता है, मतलब बाहर से एक व्यक्ति से हमको बिलीफ आता है. डेल्यूशन मतलब हम ही हमको फूल कर सकते हैं. ये सिर्फ इंसान छोड़ के खुद का बेवकूफ कोई नहीं कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते. Only human being can do it. So again, coming back to that line, the idea that somehow, someday he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. The persistence of this illusion, ये माया, नहीं इस बार मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, is astonishing. Many pursue it into the gates of insanity or death. इसमें एक शब्द है pursue. अब डिक्शनरी pursue देखा तो a vigorous dedication towards a certain objective. What are you doing, man? I'm pursuing MBA. I'm pursuing a doctorate in microbiology. I'm pursuing a MPhil in astrophysics. Pursue का मतलब dedicate your life. पूरा जिंदगी को त्याग कर देता है एक गोल के लिए. ऐसे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा. बट हमने पूरा लाइफ इसके ऊपर डेडिकेट कर दिया. एक ना एक दिन मैं दूसरों की तरह पी के दिखाता हूं. हम इसको इतना सीरियस लेके पागलपन या मौत तक क्यों जा रहे हैं? तब क्या सच में हमको मालूम नहीं है इतना प्रॉब्लम में है बोल के. दैट इज बिकॉज ऑफ द डेल्यूशन एंड द ऑब्सेशन. बहुत रिहैब्स में
आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा रहे हैं तो सांसारिक जीवन तो वो में लक्षण आध्यात्मिक जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि थोड़े टाइम Shall I continue? Yes, please. Yeah, Please continue, Raj. yeah, 1 minute. I just what I was talking about. Yes. The pursuing means why do you pursue? मतलब मैं ऐसे बन के दिखाता हूं that I can control and enjoy my drinking. So we pursue it till we either go mad or die, but we don't recover. We learned that we have to fully concede to our innermost selves that we are alcoholics. This is the first step in recovery. The delusion मतलब illusion का opposite है. उधर मैजिशियन पहाड़ है, जादूगर इधर अंदर ही बैठा है, हमारा दिमाग के अंदर बैठ के बता रहा है इस बार ठीक हो जाएगा, पियो. The delusion that other people are presently maybe has to be smashed. Then come to page number 31. इधर बहुत अच्छा लिखा है, paragraph 1. Despite all we can say, many who are real alcoholics, मेहरबानी करके इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, नोट कर लो. Despite all we can say, many who are real alcoholics. He is not the hard drinker. Many who are real alcoholics means एक ही क्वालिफिकेशन है रियल अल्कोहलिक का, he cannot quit, control, moderate. Are not going to believe they are in that class. नहीं, मैं ऐसे अल्कोहलिक नहीं हूं, मेरे को आध्यात्मिक जागृत कुछ नहीं चाहिए, मैं रिहैब में जाके भर्ती हो जाता हूं, 3 महीने में ठीक हो जाता हूं. Why we are not going to believe is because of the delusion. जब तक मेरा delusion नहीं निकलेगा, मैं मानता नहीं यार मैं ऐसे अल्कोहलिक हूं. हो सकता है तुम ऐसे पीते, मेरे ऐसे कुछ नहीं. By every form of self-deception, मतलब deception मतलब एक बोल के एक करने का. सेल्फ डिसेप्शन का मतलब खुद को ही चीट करते हैं, वो हमको मालूम नहीं, ताकि डेल्यूजन ऊपर काम कर रहे हैं, उसके नीचे हम काम कर रहे हैं. Self deception and experimentation, they will try to prove themselves exception to the rule, therefore non-alcoholic. Page 31, last paragraph. We do not like to pronounce any individual as an alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. इधर किताब पहले बार बोलता है, अगर तुमको शक है, तुमको आध्यात्मिक कार्यक्रम का जरूरत है या नहीं है, तो हमारा टाइप का, हमारा वर्क का बेवड़ा है क्या, या हार्ड ड्रिंकर बेवड़ा है क्या. ऐसे हार्ड ड्रिंकर बेवड़ा तो क्विट, कंट्रोल, मॉडरेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. We would not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. Step over to the nearest bar room and try some controlled drinking. Try to drink and stop abruptly. Try it more than once. It would not take you long to decide if you are honest with yourself. It may be worth a bad case of jitters if you get the full knowledge of your condition. The delusion is broken again and again. जितना बार हम 1000 बार पी के गटर में गिर के खुद को मालूम है अंदर से यार ये हमको मार डालेगा, फिर बंद नहीं होता है ना. Page 33, last paragraph. To be gravely affected, one does not necessarily have to drink a long time or to take the quantities some of us have.
मतलब अल्कोहलिज्म ये से पी के बहुत मन से शरीर से अफेक्ट होने के लिए ज्यादा पीने का जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा वक्त भी पीने का जरूरत नहीं. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू टू वुमेन. Potential female alcoholics often turn into real and are gone beyond recall in few years. Then, page 34, second paragraph. For those who are unable to drink moderately, the question is how to stop altogether. Whether such a person can quit on a non-spiritual basis depends upon the extent which has already lost the power to choose whether he will drink or not. जब तक हमारा हमारा कंट्रोल में है, आज इतना ही पीऊंगा, पी के जाके सो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है मैं इतना ही पीऊंगा बोल के पूरा बॉटल पी के अगले दिन ट्राई करता है, अगले दिन ट्राई करता है, अगले दिन ट्राई करता है. ठीक है, छोड़ देंगे, छोड़ दिया तो ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल दोबारा चालू होता है. दोबारा चालू हुआ तो किधर छोड़ा उधर से वो 2 गुना ज्यादा हो जाता है. Thirty-four, last paragraph. How shall we help our readers determine to their own satisfaction whether they are one of us? Are they a real alcoholic? Are they chronic alcoholic? Are they hopeless alcoholic? Are they alcoholics of the doomed variety? The experiment of quitting for a period of time will be helpful, but we think we can render a even greater service to alcohol sufferers and perhaps to the medical fraternity. So we shall describe some of the mental states that pursues a relapse into drinking, for obviously this is the crux of the problem. ठीक है, छोड़ देता है, छोड़ के दोबारा जाके क्यों पीता है? तो इसमें 2 उदाहरण देता है. याद रखिए ये चैप्टर क्यों चालू किया? हमने बिना आध्यात्मिक कार्यक्रम, हमारा जैसे बेवड़े ये वर्ग का बेवड़े लोग हैं, बिना आध्यात्मिक जागरण या अनुभव ये दारू से मुक्ति मिलेगा तो नहीं मिलेगा. वो इधर एक्सप्लेन कर. एक कहानी है जिम के बारे में. दिस इज अबाउट जिम. इट इज इन पेज नंबर 35, second, third paragraph. On leaving the asylum, he came into contact with us. We told him what we knew of alcoholism and the answer we found. He made a beginning. His family was reassembled. He began to work as a salesman for a business he had lost through drinking. All went well for a time, but he failed to enlarge his spiritual life. आके फेलोशिप जैसे उधर दारू बंद करके 3-4 महीने ऐसे फेलोशिप का ताकत में ऐसे जा रहे. उतना वो टाइम पे उतना फेलोशिप इतनी था. To his concentration, he found himself drunk half a dozen times. More than 6 times he kept on drinking bad, 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 bad. And finally, ये लोग जब जाके उसको हॉस्पिटल में मिलता है, he agreed he was a real alcoholic and in a serious condition. And उसका कहानी पूरा बोलता है, बट मेरे को करने को ताकत नहीं है बोल के. Finally, Fred वो steps करता है and he gets free from alcohol. हमारा किताब में insanity बोल रहे हैं. If you look at page 37, he explains. ये फ्रेड है, किधर जाके पीता है, उधर बैठ के he goes to a bar, he orders milk and sandwich. दो तीन दूध का ग्लास और सैंडविच खा के फिर सडनली एक आइडिया आता है, पूरा पेट है, इसमें थोड़ा ब्रांडी डाल के पिया तो क्या होगा. एक्सपेरिमेंट चालू होके ऐसे 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 आ गया. Why is that an alcoholic, after a period of remaining away from alcohol, what makes him go again back to alcohol? So page 37, first paragraph says, whatever the precise definition of the word may be, we call it plain insanity. How can such a lack of proportion in the ability to think straight can be anything? Then we come to page 39.
That was the story of Jim. This is the story of Fred, I'm sorry. Fred is a partner in a well-known company. Last paragraph में लिखता है, we first saw Fred about a year back ago in the hospital. ये लोग सब बता रहे हैं ऐसे ऐसे यार ये आध्यात्मिक कार्यक्रम करने का, ये पूरा सुनता है. सुनने के बाद वो बोलता है, आप जैसे वहां तक मैं नहीं आया. मैं हॉस्पिटल से बाहर जाके मैं मैनेज कर सकता हूँ. यही का आपका वो जो आध्यात्मिक इसका रास्ता का जरूरत नहीं है. थैंक यू, बाय बाय. तो ये लोग को बता रहे फ्रेड. Fred would not believe himself an alcoholic, much less accept a spiritual remedy for his problem. उसके बाद वो चला गया, ये लोग आ गया, ये लोग. 3-4 हफ्ते के बाद we heard no more of Fred for a while. One day we were told that he was in a hospital. This time he was quite shaky. He soon indicated he was anxious to see us. हॉस्पिटल में है, बहुत बड़ा बैड कंडीशन है, वो बहुत एंशियस है आपको जल्दी जल्दी मिलने का. इस बार उसको पूछता है, वो बोलता है हाँ, बिना आध्यात्मिक कार्यक्रम मेरे को ओवर रहना तकलीफ हो रहे. अभी मैं मानता हूं मैं अल्कोहलिक हूं, आपका वर्ग का है. तभी हॉस्पिटल में बैठ के in the book page 42 last paragraph उसका from his point of view बोलता है. Then they outlined the spiritual answer and the program of action which 100 of them had followed successfully. Though I had been only a nominal churchman, their proposals were not intellectually hard to swallow, but the program of action, though entirely sensible, was pretty drastic. It meant I would have to throw several lifelong conceptions out of the window. We held on to our old ideas. The result was nil. सब पुराना आइडिया फेंको. It meant I would have to throw several lifelong conceptions out of the window. Concept is idea only. That was not easy, but the moment I made up my mind to go through the process, I had a curious feeling that my alcohol condition was relieved, and in fact it proved to be. Quite as important was the discovery that the spiritual principles would solve all my problems. I've been brought to a way of living infinitely more satisfying, and I hope more useful than the life I lived before. Page 43, second paragraph. Fred's story speaks for itself. हम बोलने का जरूरत नहीं है. फ्रेड का कहानी खुद आपको समझा रहे हैं. We hope it strikes home to thousands like him. Then, page 43, last paragraph. Once more, the alcoholic at certain time has no effective mental defense. फिजिकली हमको बांध के रखते तो थ्रू आउट लाइफ पी नहीं सकते. Maybe हम आजाद, when we are free and when we are going about, we are unable to control the mind because we have got a delusional mind. My friends, alcoholism is not a disease of denial. It is a disease of delusion. This denial is a word that has come from treatment centers. I don't have anything against treatment centers. I am a product of a treatment center. डिनायल का मतलब है मैं कुछ चोरी किया, मेरे को मालूम है, सब पूछते के टाइम पे मैं नहीं किया बोल रहा हूँ. डिनायल मतलब मेरे को मालूम है मैं क्या किया, उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं. डेल्यूजन का मतलब है मैं क्या किया वो मेरे को सच में याद नहीं है, और जो मैं कर रहा हूं मेरे को सही लग रहा है. So when you tell me you're drinking too much, I will not believe you. Once more, the alcoholic at certain time has no mental defense against the first drink. Except in few rare cases, neither he nor any other human being can provide such defense. His defense must come from a higher power. बिल डब्ल्यू हर बार क्या करता है,
एक चैप्टर का लास्ट वर्ड में अगला चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। वे अगला चैप्टर द एग्नोस्टिक, तो इधर उसको हिंट दे रहे। आर यू एबल टू फॉलो मी? Yes, Raj. Am I going fast or is it clear? We No, can no, take you are questions. absolutely okay. Okay, thank you. Yeah. बिकॉज मेरा क्या होता है, कभी कभी एक दो स्किप करने को मन करता है, थक जाता हूँ, बट अंदर से लगता है अरे यार इसको स्किप किया तो हो सकता है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे करते करते एनीवे लीव इट टू गॉड। So we'll come to the chapter, the agnostic. This is the most vital, important chapter in the entire big book. We agnostic मतलब जो भी अल्कोहलिक है एग्नोस्टिक है। तो मैं एग्नोस्टिक हूं क्या सोचने का जरूरत नहीं है। आप फेलोशिप पे आके बैठा तो यू आर एग्नोस्टिक। Who is agnostic? The atheist firmly believes there is no God. A theist believes and has faith there is a God. An agnostic says you cannot prove or disprove the existence of God. जितना भी हम मंदिर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर से अंदर हमको 100% का फेथ नहीं है उधर है भगवान बोल के, ताकि इट इज अननोबल। भगवान जानता है यार वह है नहीं है, क्यों वो चर्चा में पढ़ने का। सब लोग मंदिर जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। अगर भगवान है समझो, इतना मैं पाप कर रहा हूँ, कुछ मेरे को श्राप दे दिया तो the agnostic does not have a very clear cut idea. Neither is an atheist. Atheist है तो भी चलो जाओ, चलो भगवान नहीं यार, पूरा लाइफ मेरा जिम्मेदारी, मैं उस हिसाब से करूंगा। Theist is a firm faith है उसका। An agnostic says you cannot prove the existence of God. So in the chapter of the agnostic, in the first paragraph, come to the fourth line. If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely. अभी तुमको इच्छा होगा तो दारू नहीं कर सकते। Or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. Probably हम क्यों बोल रहे हैं? आप डिसाइड करो बाबा, हम नहीं बताएंगे। You have to decide with your own experience in life. कितना बार रिहैब गया, कितना बार स्लिप हुआ, कितना बार ए में बैठ के 2 साल 3 साल के बाद स्लिप होते आया। Why do you slip again and again when others can recover? अगर आप मीटिंग में ही रह के आप मीटिंग आते आते 10 साल सोबर है तो आप हमारा वर्क का अल्कोहलिक नहीं है, फिर भी अच्छा है, आ जाओ, ये यू आर वेलकम। तो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अरे मैं स्टेप्स नहीं किया, तुमको नहीं करने का बाबा, ताकि 10 साल से तुम सोबर है तो मेरा जैसे अल्कोहलिक तो मरता था 10 साल के अंदर। तो मेरा वर्क का लोग उसको देख के मैं वैसे सोचता है। This is where they clear of everything for you. Probably means you find it for yourself. If that be the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. कुछ भी बीमारी को नहीं बाबा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए बोल के, कुछ भी मेरा नहीं। अभी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये स्टेप्स क्यों लिखा है? सब इंसान का, पूरा दुनिया में एक बीमारी है, सोच है। इंसान का सोच क्या है? गया हुआ कल में जाता है, गया हुआ कल में गया तो पूरा गिल्ट और रिमोर्स, अरे यार ऐसे करने का था, वो करने का था, उधर हाँ बोलने का था, इधर ना बोलने का था, उधर इन्वेस्ट करने का था। और आने वाला कल में जाएगा, तेरा होगा क्या खा लिया,
उम्र हो चुका है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, बिजनेस ऐसे है, आने वाला कल में पूरा डर है, गया हुआ कल में पूरा रिग्रेट है, गिल्ट है, रिमोर्स है। और आज ये दोनों के बीच में फंस के कुछ नहीं कर सकते। इंसान का सब सब दुख का कारण है उसका सोच है। सोच को ठीक कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारा सोच ही टेढ़ा है, डिल्यूशनल है, उसको कैसे ठीक कर सकता है? A sick head, a sick person mentally cannot fix a sick person, other sick person, or he cannot restore himself. Next paragraph. Next paragraph, chapter 4, same page, 44. To one who feels is an atheist or agnostic, such an experience seems impossible. But to continue as he is means disaster, especially if he's an alcoholic of the hopeless variety. मैंने बताया ना, रियल अल्कोहलिक, होपलेस वेराइटी, अल्कोहलिक, आवर डिस्क्रिप्शन बार 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 आएगा ये। टू बी डूम्ड टू एन अल्कोहलिक डेथ और लिव ऑन स्पिरिचुअल बेसिस आर नॉट इजी ऑल्टरनेटिव्स टू फेस। हमारा एवरी टाइम व्हेन वी रीड आवर चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स, वी वर एट द टर्निंग पॉइंट। To be doomed to an alcoholic death or live on a spiritual basis, what is going to be the choice? Everywhere when Bill writes, he's asking you, you make a decision now. To be doomed to an alcoholic death. What is doomed to an alcoholic death is an alcoholic of my type will drink against his wish till he dies. An alcoholic of my type, you call it chronic, doomed, hopeless, real, whatever it is, he will either recover or he will die. Page 45, we agnostics. इधर तक he has not brought God into picture. He is telling you what is the purpose of this book. We agnostic, page 45, first paragraph. Lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves. Obviously, but where and how were we to find this power? अरे भाई ठीक है, भगवान को मतलब ढूंढ के उसको फाइंड हिम, बट किधर है वो और हम क्या करने का, कैसे करें? बट वेयर एंड हाउ वेर वी टू फाइंड दिस पावर? अगला पैराग्राफ में लिखता है, वेल दैट इज एग्जैक्टली what this book is about. This book is not about to help you quit drinking. Yes, it is a byproduct. This book is not about my drinking or my behavior or my psychology. This book is about you and God, me and God. Well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you find a power greater than yourself which will solve problem. Friends, you will not believe, I must have gone through so many big books to find out there is a printing error. You cannot write problem, you have to write problems. It has to be plural, it cannot be singular. मेरे को 1000 प्रॉब्लम है, पर इसमें लिखा है which will solve problem. Lack of power, that was a dilemma. When I find the power, I don't have any problems at all. The solution for all my problems, solution is in that power.
There is no book on earth which says the clear-cut direction, ये 12 पैर करो, whether you like it or not, God will show. There is no need for you to do this program 100%, which nobody can do. एक उदाहरण देता हूं. हमारा बच्चे जब छोटे छोटे थे, एलकेजी यूकेजी जाके उधर ये सीख के आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. घर में आके मम्मी पापा दादा दादी को सब बताता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे ऐसे. बहुत उसमें गलत होगा, इंग्लिश गलत होगा. वो उसको बोलने के बाद हम सब ताली बजाते हैं, उसको एंकरेज करने के लिए. हमारा हायर पावर वैसे ही है. जितना भी गिर के उठ के जैसे जैसे आड़ा टेढ़ा करो करो, बट जितना तुम्हारे से उतना हुआ उतना शाबाशी मिलेगा. हमारा ताकत से ज्यादा हम नहीं कर सकते ना. तो पहले से ही बोल दिया ना, सरेंडर करना के. सरेंडर किया हुआ आदमी का क्या ताकत होगा. जिस दिन हमने सरेंडर कर चुका है तो मेरा लाइफ का जिम्मेदारी भगवान का. वो लाइफ को मैनेज करेगा, मैं लाइफ को एंजॉय कर देगा. जब भी मेरा लाइफ को मैनेज करने को चक्कर में गया तो ही मेरे को तकलीफ होता है. लाइफ बिकॉज वेरी अनमैनेजेबल. Page 46. I'm sorry, page 47. Again, Bill W. will ask you certain questions. Here you'll have to keep answering them and proceeding. Page 46, paragraph 2. Do I now believe, or am I even willing to believe, that there is a power greater than myself? As soon as a man can say that he does believe or is willing to believe, we can emphatically assure him that he is on his way. It has repeatedly proven among us that upon this simple cornerstone, a wonderful, effective spiritual structure can be built. A cornerstone or two stones that holds an arch. Your first step is a cornerstone. Step 2 is a cornerstone. Step 3 is called the keystone that holds the arch. The arch is a symbol in theology, religion. द्वार है वो द्वार. It is a gateway to heaven. Bill W. is giving us a mental picture of an arch that we are building with our new belief, with our new willingness. स्पिरिचुअलिटी दोस्तों सब जान के नहीं जाता है. सीख का मतलब ढूंढो. सीख. It never says find God, because we can never find God. God is beyond our comprehension. अगर एक चीज हमारे कॉम्प्रेशन के बाहर है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं बोल के एक क्वेश्चन आएगा. एक छोटा उदाहरण देता हूं. जब न्यूटन saw the apple falling down, he saw the effect. इसका कारण क्या हो सकता है? What is the cause? Looking at the effect, finding the cause is called discovery. Looking at the effect and creating a cause. Looking at the effect, the fishes are swimming, the birds are flying. Why? What is the cause? Looking at the effect and creating a cause is called invention. By looking at the cause, you will have to, looking at the effect, you have to find the cause. When I look at myself as an alcoholic, what is the cause? What is the cause for my alcoholism? How do I find it?
One is called known, one is called knowable. The third thing is unknowable because I do not know the cause. I only know the effect. If you want to find the unknowable, there is a method of learning and that is called revelation. Revelation means God directly downloading that particular knowledge into your head. And that is called spiritual experience. So if anybody is having a doubt, how am I going to find God? You don't worry. You have to just start. And in this program, you take one step, God will take 100 steps. This is my personal guarantee. Okay, we come to page number 50. In our personal stories, page number 50, paragraph 2. In our personal stories, you will find a wide variation in which each teller approaches and conceives of the power which is greater than himself. Whether we agree with a particular approach or conception seems to be of little difference. Experience has taught us that these are matters about which, for our purpose, we need not be worried. These are questions for each individual to settle for himself. The spiritual journey is just between you and God. We come to page 52. इधर मैं कुछ चीज पढ़ के गैप देता हूं, आप मन के अंदर हां या ना बोल दीजिए, बस हां या ना उतरेगी. Page 52, third paragraph. We were having trouble with personal relationship. Ha ya na? We could not control our emotional nature. Yes or no? We were a prey to misery and depression. Yes or no? We couldn't make a living. Yes or no? We couldn't make a living का मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे. We couldn't make a living मतलब हम समाज में बीवी बच्चे माँ बाप ये सबके साथ जी रहे. We couldn't make a living among in the society. We had a feeling of uselessness. Yes or no? We were full of fear. Yes or no? We were unhappy. Yes or no? We couldn't seem to be of real help to other people. Yes or no? This, my friend, is called untreated alcoholism. ये 3-4 वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने का. We were full of fear. Not 50%, 60%, 70%. We were full of fear. और लिखता है we were unhappy. अरे भाई क्यों unhappy? We were unhappy. We just cannot be happy. घर पे 4-5 लोग बहुत खुशी से, आपको अच्छा नहीं लगता है. We don't understand what is there to love. Life इतना सीरियस मामला है. We had a feeling of uselessness. This is called the spiritual malady. Page 53, third paragraph. When we became alcoholic, crushed by self-imposed crisis. Self-imposed मतलब खुद का खुद पनिशमेंट को क्या बोलते हैं, सजा, खुद का खुद सजा देते जा रहे. We could not postpone or evade. We had to fearlessly face the proposition that either God is everything or else he is nothing. God either is or he isn't. What was our choice going to be? He's asking us, Bill.
हमारा लाइफ अस्त व्यस्त हो गई, ये स्थिति पे आ गया, दारू बंद नहीं कर सकते, बंद किया तो दोबारा चालू करता हूँ, चालू किया तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मॉडरेट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कंडीशन में लाइफ में पूरा क्राइसिस में है। तो ये कंडीशन आ गया तो वी हैव टू फेस द प्रपोजिशन दैट ईदर गॉड इज एवरीथिंग और एल्स इज नथिंग। गॉड ईदर इज और ही इजंट। What was our choice to be? Page 55, he says where you will find God. Paragraph 3, last 3 lines. Sometimes we had to search fearlessly, but he was there. He was as much a fact as we were. We found the great reality deep within us. In the last analysis, it is only there he may be found. It was so with us. Friends, हमने इंडिया में हैं. People from West, they come to India to learn spirituality. This is the country where we got 6,000 crores of gods. You can have any concept of God, you have got so many gods, goddesses. For every man, faith in God is a very एक embedded chip है, already है अंदर. बट कुछ कारण के लिए वो कवर अप हो चुका है, तो दोबारा साफ करके क्लियर करने का. And finally, we agnostic, page 57. First paragraph, last 2 lines. Seemingly he could not drink even if he would. God had restored him to sanity. This agnostic is connecting you towards God and your second step. Page 57, second paragraph. What is this but a miracle of healing? Yet its elements are simple. Circumstances made him willing to believe. Circumstances made him willing to believe. Friends, we never go to God because we want to get introduced to God or we want to see him out of love, affection. We turn to God when we have lost everything, when all the doors are shut, when all human resources fail. There's nothing but darkness around us. Momentarily, when the ego goes out, we cry from within our spirit. And that is the best prayer, because that prayer God always hears. That willingness to believe. आपने देखा होगा गांव में वो तोता भविष्य बताता है. 10 रुपया दिया तो वो एक कार्ड निकाल के फिर वो बनना पड़ेगा. इंसान का टाइम खराब हो चुका है तो तोता भी जो बोलता है उसको सुनने को तैयार हो जाता है. अगर वो स्थिति में हमने ये आया तो एक किताब जो बोल रहे उसको करने को तैयार है. Circumstances made him willing to believe. He humbly offered himself to the Maker, and then he knew. Last 2 lines. He came to all of us who honestly sought him. When we drew near to him, he disclosed himself to us. Chapter 5. This we read every day. Every day we read. Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. What is our path? अभी तक जो BLW ने बताया वो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता. Concede yourself that you are incapable of drinking. Your life is unmanageable because of your delusion. And because of your obsession and delusion, you cannot think straight and you cannot quit drinking. Those who do not recover are people who cannot or will not
कैनॉट और विल नॉट को कितना लोग को मालूम है फर्क है? कैनॉट का मतलब है एक बंदा बोल रहे यार मेरे से नहीं होगा यार, इतना ये सब बहुत आध्यात्मिक, ये सब चक्कर आ रहे मेरे को, नहीं रे हमने किया तो धीरे धीरे करो, बताया उसको, थोड़ा एंकरेज किया तो वो करेगा। विल नॉट का मतलब है नहीं करूंगा, मत करो। Those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to simple program. Second paragraph. Our stories disclose in a general way what we used to be like, what happened, and what we are like now. What we used to be, we were alcoholics like you. Real alcoholics who could not quit, control, or moderate. रियाब गया, पुलिस स्टेशन गया, इधर गया उधर गया, गाड़ी ठोका, फ्रैक्चर हुआ, बीवी छोड़ के गया, बहुत कुछ हो चुका है, रास्ते पे आ गया। व्हाट हैपेंड? ये प्रोग्राम मिला, इसको ट्राई किया हमने, उधर से हमको दारू से मुक्ति मिला, हम जाके बहुत लोग को पास ऑन कर रहे हैं, लाइफ है बहुत अच्छा है। व्हाट वी आर लाइक नाउ, वी आर हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, वी डोंट हैव वरी, वी डोंट वरी अबाउट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, पीपल, we are freed. If you have decided you want what we have, you want to have freedom from alcohol, freedom from jealousy, hatred, resentment, freedom from this hellish living. नरक का जीवन जी रहे दारू पी। If you have decided you want what we have and are willing to go to any length का मतलब कितना मेहनत करने का भी सिद्ध है क्या तुम? एक बार इसके अंदर घुस गया तो नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये बहुत गर्म है, वो बहुत ठंडा है, ये बहुत कड़क है, बहुत नरम है, वो ऐसे है, वैसे बहुत दूर है, वो सब साइड में रख दो। कुछ भी करने के लिए ये सिद्ध है, then you are ready to take certain steps. And some of them we balked का मतलब मजाक उड़ाने का। We thought मतलब दिमाग से सोच रहे थे, we could find an easier softer way. We thought मतलब हमारा delusion बोलता है यार ये छोड़ो यार, इससे बेटर मैं सोच सकता हूँ, तुम ऐसे बेवड़ा नहीं है। वो सोच हमारे साथ ही है दोस्तों, हमको मार डाल के ही जाएगा वो। We could find an easier softer way, but we could not, किताब बोल रहे। With all the earnestness at our command, we beg of you, मतलब हाथ पैर छोड़ता हूं, पकड़ के पूछता हूं, be fearless and thorough from the very start. Some of us have tried to hold on to our old ideas. The result was nil until you let go absolutely. Remember that we deal with alcohol, cunning, baffling and powerful. Alcohol cunning नहीं है दोस्तों, अल्कोहलिक का दिमाग कनिंग है, अल्कोहल पावरफुल है, बैफलिंग है। हमारा सोच बार बार जाके पी के मार खा रहा हूं, आज सोचा आज नहीं पीऊंगा, फिर शाम को पी के दोबारा गटर में गिरा हूं। We don't know that's the delusion making us doing, the obsession, the delusion. Without help it is too much. But there is one who has got all power. बिना मदद इसमें से तुम बाहर नहीं निकल सकते, चक्रव्यूह जैसे। बट एक शक्ति है, उसके पास सब पावर है। That one is God. हमने बोलते हैं गॉड आई अंडरस्टूड हिम, मिसअंडरस्टूड हिम, आई डोंट अंडरस्टूड हिम। क्लियरली लिखा है ईश्वर। मे यू फाइंड हिम नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट में रहो, गया हुआ कल में जाके मत बैठो, गया पूरा। आने वाला कल जैसे कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा भरोसा नहीं है। आज ही टाइम है, अभी बैठ के पकड़ो, ताकि भगवान इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। हाफ मेजर्स अवेल डज नथिंग। 1 लीटर का डब्बा लेके उसमें आधा लिया तो 500 ml आना चाहिए ना। ये प्रोग्राम में हाफ मेजर्स अवेल डज नथिंग।
किया तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। 3 स्टेप किया हूं, इसके बाद सोच रहा हूं तो वो नहीं होगा। Here are the steps we took, which are suggested as a program of recovery. We admitted we are powerless over alcohol. It never says we admitted we are alcoholics. We admitted we are powerless over alcohol. When I say that I am powerless over alcohol, I am referring to the chapter, to the agnostic, which says, if I honestly want to quit, I find I cannot. I cannot quit, control, or moderate. I need a spiritual experience to get out of this disease. That our lives have become unmanageable. Why is my life unmanageable? Because of my delusional thinking, the obsessive thinking. Came to believe that a power greater than ourselves can restore us to sanity. Restoring us to sanity means he is going to remove the obsession. Along with the obsession, your delusion, your illusion, everything goes away. When this is done, you can see the right from the wrong. Sach kya, jhoot kya, samajh mein. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. अभी तक क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया. चलो उतने नहीं, चलो चालू करो. You cannot fully understand God and start. Whatever understanding you got, you begin from there. What do you think Bill W. had? Bill W. also had zero knowledge of God. Made a decision. हमने निर्णय लिया. हमने दारू बंद करने के लिए कितना 1000 निर्णय लिया, एक बार हमने किया. निर्णय का मतलब एक्शन नहीं है. निर्णय का मतलब सोच में ही है. निर्णय लिया तो उसके वजह से कुछ नहीं होता है. मैं ताजमहल जाके देखने का मून लाइट में निर्णय लिया तो फिर मैं फ्लाइट का टिकट लेने का, आगरा में होटल बुक करने का, फिर फुल मून नाइट में देखने का, वापस आने का, ये निर्णय का. तो किसी ने पूछा अगले दिन, यार तुम जाके नहीं आया आगरा? नहीं रे, मैं चेंज कर दिया. तो निर्णय कभी भी हम बदल सकते हैं. ऐसे मत सोचो निर्णय ले लिया तो ऐसे है बोल के. So now we come to the page 12. Third paragraph. Our description of the alcoholic. The chapter to the agnostic and the personal adventure before and after the spiritual experience make clear 3 pertinent ideas. The first 3 steps are dealing with your ideas. I am thinking I am not an alcoholic, I can manage my life, I don't require God. But after going through the book, you realize that you are not going and drinking, you are made to drink by the disease. Your life is manageable, unmanageable, and you cannot stop is because you got obsessive mind and a delusional head. And God alone can restore that. Are you believing that? That we were alcoholics, could not manage our lives. That starts from doctor's opinion to Bill's story to there is a solution. That probably no human power could have relieved our alcoholism. It is there is a solution where both the doctors are talking that you should have a spiritual experience. That God could and would if he were sought. That is what is chapter to the agnostic. The main purpose of this book is to enable you find your higher power, which will solve your problem. Being convinced we are at step 3, which is that we have decided to turn our lives, our will and lives over the care of God as we understood him.
Just what do you mean by that? Just what do we do? अभी यहां तक दारूगिरी के बारे में बात कर रहा था बिल, अच्छा लग रहा था। नदी भगवान ये वो बोल के अभी विल, सेल्फ विल, गॉड्स विल, क्या क्या कंफ्यूज कर रहे हैं। Being convinced we are at step 3, which is that we have decided to turn our will and our lives over the care of God as we understood Him. Just what do you mean by that? अरे यार तुम क्या बोल रहे हैं? What do we have to do? हम क्या करने का यार, ये बताओ। बिल देखो, लिखने का टाइम पे हमारा दिमाग में बैठ के सोच रहे हैं। बेटा बहुत इंपेशेंट होता है यार, जल्दी बोला यार, क्या करने का। Either friends, I want to tell you there are 3 wills in the universe operating. One is called a self will. A self will means selfish will. Selfish will का मतलब my money, my sex, my house, my happiness, my pleasure. Don't give a damn about others. Free will का मतलब मेरा घर नहीं है, इसमें मेरा बीवी बच्चे सब है। सोच उसको ऐसे है, सिर्फ ये मेरा ही घर नहीं है, मेरा बच्चे लोग है, बीवी है। सिर्फ मेरा खुशी नहीं है, मेरा फैमिली का है। फ्री विल का मतलब वो सेल्फिश विल को अवॉइड करके उसका फ्रीडम है अच्छा करने का। और तीसरा विल है गॉड्स विल। There's a great proverb in English called where there is a will, there is a way. हमारा जैसे बेवड़ा ने एक शब्द उससे निकाल दिया। Where there is God's will, there is a way. So just what do you mean by that, and just what do we do? The first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. Any life run on self-will, not free will, not God's will. Self-will का मतलब मेरे को 10,000 मिला बाबा, 4,000 में बार पुराना इसका सब हिसाब तब क्लियर किया, 2,000 पार्टी किया, बाकी कुछ कपड़ा लेके आ गया। आई एम थिंकिंग सेल्फिशली। घर पे पैसे दिया क्या, बच्चे लोग कितना दिन भूख लग रहे, भूखा बैठे है, स्कूल फीस भरा के, कुछ नहीं सोचते। An alcoholic is the most selfish, self-centered, inconsiderate, immature, unaccountable, dishonest person. Any life that is run on a self-will can hardly be a success. On that basis, we are always in collision with something or somebody. Page 60, last paragraph. Each person is like an actor. हमारा बेवड़ा each person is an actor लिखा है, बड़ा हीरो हीरो नहीं लिखा है। Who wants to run the whole show, forever trying to arrange the lights, the ballet, the scenery, the rest of the players in his own way. If his arrangements should only stay put, if people would do as he wished, the show would be great. Everybody, including himself, will be pleased. का मतलब क्या है? मैं शो चला रहा हूं, मेरा बीवी, बच्चे, मेरा सास, my father-in-law, they're all there. तो मेरा शो मैं खुद लिख रहा हूं, इधर लाइटिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं दारू पी के आया तो आप लोग मुझे देख के डांटने का नहीं, बीवी का डायलॉग देता हूं, हाँ जी समझता हूं, आप ऐसे भी 2-3 साल में छोड़ देंगे, आप मेरे को, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। मदर ला के बोल देगा, मैं भी ज्योतिष को देख के आया, 1-2 साल में ये पनवती निकलेगा। फादर ला के बताएगा, आप आके आराम करो, मैं आपका ऑफिस में बात किया, वो लोग को समझाया मैंने, दामाद डेली नहीं आ सकता है, साल में 2 बार ऑफिस आ सकता है, आप सैलरी महीने का उसको बैंक में जमा कर दो। If his arrangement would stay put, if only people would do as he wished, मेरे इच्छे
पर नाचो. The show would be great. Everybody, including himself, will be pleased. Life would be wonderful. अगर मैं खुशी रहने के लिए आप लोग दुख में डूबना पड़ता है. In trying to make these arrangements, our actors may be sometimes virtuous. He may be kind, considerate, patient, generous, modest, self-sacrificing. वाइफ ऑटो बुला रहे, किधर जा रहे तुम? स्टेशन जा रहा हूं, मम्मी को लेके आने का. पागल है क्या तू? सास को ऐसे ऑटो में लेके जाता है? ड्राइवर को ले लो, पैसे देता हूं, गाड़ी में पेट्रोल भरो, एसी गाड़ी में लेके आ जाओ. नहीं नहीं नहीं, हम ऑटो में ही आएंगे. ताकि वो लोग को मालूम है ये 500 रुपये का पेट्रोल डाल के उसका सास को स्टेशन से घर लेके आया तो 10 लाख का फटका है. हम काइंड, कंसिडरेट, पेशेंट जब भी होता है, हमारे लिए कुछ काम होना चाहिए. होने तक पैर पकड़ेंगे, काम होने के बाद गला दबा देंगे. आम लोग हैं, they use things and love people. हम लोग we love things and use people. We simply cannot love anybody because we are full of loving ourselves only. Narcissistic people we are. Are you all able to hear me? Yes, very clear. Okay. What usually happens, the show does not come off very well. He begins to think life doesn't treat him right. अभी पूरा दुनिया के ऊपर डाल दिया. क्या दुनिया रे, छे भगवान, इतना बड़ा जीनियस को लेके ये डफर का खानदान में डाल दिया. ये लोग को मालूम नहीं कितना बड़ा जीनियस हूं मैं. अरे यार अभी क्या है, अभी 5-10 साल में बंद कर दूंगा, फिर ऐसे प्लान रखा हूं, ऐसे 2000 का गड्डी गड्डी नोट लेके आके साथ सबके सामने फेंक होगा, तभी देखो सब रोएगा. अभी के लिए एक 10 लाख पूछा नहीं दे रहे. He becomes the next occasion more demanding and gracious. Admitting he may be still somewhat fault, he is sure that other people are more to be blamed. One minute, just hold on. Others should be blamed. He becomes angry, indigent, self-pitying. Is he not really a self-seeker? Is it not evident to the rest of the players that these are the things he wants and does? Does not his action make each of them wish to retaliate, snatching all they can get out of the show? Snatching all they can get out of the show. बार बार ये क्या तो सामने वालों को समझ में आ जाता है, बीवी बच्चे भाई सबका ये इतना बड़ा हरामी है, सेल्फिश आदमी है. Snatching all they can and get out of the show. तो सिर्फ वो लाइट सीनरी, अब अकेला है स्टेज में. Is he not the victim of this delusion that he can wrest satisfaction of happiness out of the world if he can only manage well? Our life becomes unmanageable when you operate from self-will. Page 62, paragraph 1st. Selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our trouble. Jad hai. Driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-pity, self-seeking, we step on the toes of our fellows and they retaliate. Sometimes they hurt us seemingly without provocation. कभी कभी हम गलती नहीं किया, फिर भी हमको गाली पड़ेगा. अरे ये क्यों यार? ये क्यों? Why they have not done anything? But invariably find that at some time in the past we have made decision based on self
which later placed us in a position to be hurt. जिधर चोट लगेगा वो पहुंचने के जगह पे हम खुद जाके खड़ा हो जाते हैं। ये लोहे का हथौड़ा ऊपर फेंक के वो कभी गिरेगा, किधर गिरेगा मालूम नहीं है, पर अचानक वो गिरने का टाइम पे मैं उधर जाके खड़ा हो जाता हूं, which later placed us in a position to be hurt. Placed us means हमको लेके उसके नीचे खड़ा कर देता है, जैसे करनी वैसे भरनी। Next paragraph. So our troubles, we think, are basically our own making. They arise out of ourselves. The alcoholic is an extreme example of self-will run riot, though he does not usually think so. Above everything, और बहुत लोग ये सुना होगा अल्कोहलिक एनोनिमस में मस्त नहीं है। अभी मैं आगे जो 3 लाइन पढ़ रहा हूं, आप देखिए। Above everything, we alcoholic must be rid of the selfishness. We must, or it kills us. God makes it possible. And there often seems no way entirely of getting rid of self without his aid. Getting rid of self-will, selfishness. इसलिए आपका 3rd स्टेप प्रेयर में क्या बोलता है? रिलीव मी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। हमको ऐसे जंजीर में बांध के रखा है, हमें जंजीर में बांध के फंसने के बाद हम खोल नहीं सकते तो भगवान ही खोल सकते हैं। That's why it said God could and would if he were sought. अभी तक वो क्या है सेल्फ विल बता दिया। अभी बिल बोल रहे हैं ये कैसे काम करता है। दिस इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ इट। 3rd स्टेप का फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्विट प्लेइंग गॉड, इट डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट वी डिसाइडेड दैट हियर आफ्टर द ड्रामा ऑफ लाइफ गॉड वाज गोइंग टू बी अवर डायरेक्टर। हम डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ एक्टर रहो बस। ही इज द प्रिंसिपल, वी आर हिज एजेंट्स। ही इज द फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन। Most good ideas एक ही है, concept एक ही है। Most good ideas are simple, and this concept or idea was the keystone of a new and triumphant arc through which we pass to freedom. अगर आपके पास भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है तो बिल इधर दे रहा है आपको। He's going to be the director, he's going to be the principal, he's the father, we are the children. And this concept was the keystone. The first 2 steps are the cornerstone. The keystone is holding the entire structure together. अब ये बता रहे एक 3rd step बताया तो क्या होता है? When we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer. Being all powerful, he provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. More and more we were interested in seeing what we could contribute to life. As we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully, as we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We were reborn. अगर एक राजभरत नया जन्म लेने को तो पुराना मरना चाहिए नहीं। उसके बाद the next thing is your 3rd step prayer. Once you say that, the last paragraph says, next, after the 3rd step, it says, next we launched on a course of vigorous action. The first step, which is personal house cleaning. ये के अंदर पहले कदम जो action step है, 4th step है. Though our decision, 3rd step, made a decision, though our 3rd step was vital and crucial, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and be rid of the things in ourselves which has been blocking us. Step 4. 3rd step करके
though our decision was vital, the third step decision, and crucial, it would have little permanent effect I'm unless. sorry, asking, is this audible to all? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Please continue. Sorry, Raj. Please continue. We were on page 64. क्या बात? Vital and crucial. Yes. So that is step 4. And I just ran out of my train of thoughts. Anyway, so what? It's already 9:20. So. Okay. We'll come to page 64, last paragraph. Selfishness जड़ है, रूट है, तो रूट के ऊपर ट्रंक आता है, ट्रंक से स्टेम आता है. Resentment is the number one offender. It destroys more alcoholics than anything else. मतलब it destroys more alcohol than alcohol. जो sober रहता है, there are many people who have committed suicide after 6-7 years of sobriety. They did not go and drink, but they shot themselves or killed themselves. From it stem all form of spiritual disease. आध्यात्मिक बीमारी का भंडार है. तो हमने आध्यात्मिक बीमारी का मतलब क्या है, तो रिसेंटमेंट ही आध्यात्मिक बीमारी. क्योंकि अगर रिसेंटमेंट क्या है, एक छतरी जैसे, भगवान का कृपा सूर्य किरण जैसे सबको मिलता है. मेरे को किसी के ऊपर खुन्नस, गुस्सा, सेल्फिशनेस, एंगर, जैसे ये छतरी मैं खोल देता हूं. ये भगवान का ग्रेस सबको मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है. द रिसेंटमेंट की वजह से मैं खुद ब्लॉक कर दिया. Resentment will separate me from myself, my loved ones, my friends, and from God. And finally, it'll separate me from sanity and get me back to delusion. That is why people after a long time of sobriety go and drink, is because they do not maintain their spiritual condition. ऊपर इधर लिखता है, when the spiritual malady is overcome, once you remove this resentment with your fourth step, we straighten out mentally and physically. उसके बाद साइकोलॉजिकली शरीर से ठीक हो जाता है. That is why psychiatry cannot help. The spiritual sickness cannot be helped by modern medicine, because modern medicine does not deal with spirit and spirituality. Spirit and spirituality are in the book of religion, theology, philosophy, or metaphysics. In dealing with resentments, we set them on paper. बात करने का resentment है, पेपर पे डालो उसको. We listed people, institutions, and principles with whom we were angry. We asked ourselves why we are angry. Because this is not a face-to-face meeting, it is difficult for me to explain the format, but there are so many guides available. And finally, this time is getting over. Now I want to read page 66 about resentment. जो लोग ए में आके सोबर है, कुछ दिन है, 1 साल 2 साल के बाद स्लिप बार बार क्यों हो रहे हैं, उसका जवाब इधर है, पेज 66. It is plain that a life that includes deep resentment leads only to futility and unhappiness. अगर हमारा अंदर resentment है, futility and unhappiness उधर ही पहुंचेगा. To the precise extent that we permit these to be squander the hours that would have been worthwhile. रिसेंटमेंट हमको गया हुआ कल को लेके जाएगा, ऐसे ऐसे बोल दिया, वो किया, ऐसे देखा, वो बता दिया, आने वाला कल को जाएंगे, मैं सब ठीक होके पैसा कमा के उसको ऐसे करूंगा, उसको ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा. और आज पूरा दिन कुछ काम नहीं किया, ताकि हमारे दिमाग के अंदर बड़ा कमिटी बैठ के सब ये कर रहे हैं, इसको क्या सजा देने का.
But with the alcoholic whose hope is maintenance, growth of a spiritual experience, this business of resentment is infinitely grave, अनगिनत है. Danger मतलब कितना danger नहीं बोल सकता हूँ. We found that it is fatal. We found that it is fatal. क्यों बाबा? For when harboring such feelings, we shut ourselves from the sunlight of the spirit. The insanity of alcohol returns, and we drink again. And with us, to drink is to die. एक ही एक पैराग्राफ में 10 बार धमकी दी हमको. If we were to live, we have to be free of anger. The grouch and brainstorm were not for us. They may be for the dubious luxury of normal men, but for alcoholics, these things are poison. We turned back to the list, for it held the key to the future. We were prepared to look at it from a different angle. This is page 66. 1 second, third paragraph, third line, I've left it there. With this, let us finish. And maybe next time, I don't know when, Anurag Ji Shanti will fix up some time. We've got, I think, into action. I don't know what else is there. So anyway, I'm very thankful for all the people who have been listening to me very patiently. Again, I want to tell you, I generally don't make much points. Sometimes I go off the tangent. Sometimes I emphasize certain things which I feel should be emphasized. And if certain things are repeated again, they are meant to be repeated so that it goes into our system. Whatever I said to you today, it may not help, tomorrow it may not help, but somewhere in the course of your journey, every word that you heard today will pay dividends for you. And if those who have understood it, if you can help the other person who's got a Hindi book, or take a newcomer and start reading, it is only by teaching this to a newcomer we learn more and more. ये मैसेज छोड़ के और कुछ मैसेज नहीं है. ये छोड़ के हम कुछ भी बात कर रहे हैं, वो ये मैसेज नहीं. Because when an alcoholic comes, he wants to recover from the hopeless state of mind and body. He wants the real answers. It's my duty to give him the real answers. I'm very grateful to Anurag and all the members who made it possible in the All India AA, Shanti, and all you guys sitting and listening to me. Again, I'm saying, if whatever I said, if it does not reconcile with the book, throw it out. And I generally do not speak anything apart from the big book because there's nothing else to talk. Because this is a AA meeting, and more specifically about the big book, which covers the plan of recovery. There I cannot give my opinion or my suggestion. We just follow the path in front of us. Rarely we see the person fail, you follow the path. I'm very happy because 10 years back, this big book was such a this thing. A lot of people did not want to read. So much of confusion. People like Anurag and so many people have helped me in this journey. And people like Shanti, I'm very, very happy. It's a very enthusiastic crowd. Enthusiasm is very important recovery. दोस्तों ये सब जाने का प्रोग्राम नहीं, ये गया वो गया. हमारा प्रोग्राम is by attraction. तो हम ऐसे हो के आज तक मैं दारू पिया, कल क्या होगा मालूम नहीं, ये तो नया बंदा क्या लगेगा. गारंटी देना, अगर ऐसे ऐसे किया तो तुम लाइफ भर नहीं पी सकता यार. नया बंदा को ये चाहिए दारू छोड़ के कैसे जी रहे, अभी कैसे है, क्या किया उन्होंने, ऐसे एक बीमारी से कैसे इसको मुक्ति मिला. So thank you for this opportunity. It's been a pleasure, talking to you is something that does something to my soul, spirit, and that is the duty of an AA member. I'm really thankful to all the people who sat and listened.
I'm grateful to you. I'm very honored with this. Thank you. God bless you. Thank you, Raj. Thank you so much. We are all kind of spellbound with